Hey everyone, welcome back to the Excel Funda. So today we are going to solve one of the best question of Leetcode, right? So don't worry, and this title maybe sound like a little scary, but at the end of this video you will understand it's completely, and even you will be able to explain it to your friends and somebody. Okay, so डरने का नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट? टाइटल से घबराने का नहीं, प्रॉब्लम बहुत ईजी है. सो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैसे सॉल्व करना है. ओके, वेरी फर्स्ट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, गिव मी 1 second. What the question is saying that it is saying the smallest missing non-negative integer after operations we have to find. Okay, so let's break it down the problem into very simple steps. So what you have given nums, you can say here, and we have given a you can say value. Nums and value, two things we have given. So in one operation you can add or subtract from the given elements of the nums, right? For example, if you have given 1 to 3, value is 2, so you can choose to subtract the value from nums at 0. So if you subtract anything, let's suppose value 2, right? You know that we have 1 2 3, means 1 is the current value at nums at 0. If you'll do minus, let's suppose you are choosing to subtract minus 2, what you will get? Minus 1. And so the new array is what? It is minus 1 2 3. The new array, we cannot say the new array, but you are subtracting the value from the given elements of the array. So it can be happen as many as time you can do these operations to subtract and add, you can say that, right? You can add and subtract, both you can do that. So after doing all the possible operations, you want to find the smallest non-negative integers, and that non-negative integers, a smallest missing non-negative integer, it is what is the MEX? It is a minimum excluder for an array, is the smallest missing non-negative integers. So now it is saying what you have to do, you have to return the smallest non-negative integers, right? You have to find. Okay, means if you apply the operations, let's suppose positive or negative cases, right? If you are adding the value, you are subtracting the value, right? So after doing all the operations, right, you want to find the smallest non-negative integers that cannot create from this array. So we'll try to understand how to find that. Okay, so don't worry, I'll suggest please pause this video, right, and try to understand. So what is the MEX? MEX is the smallest missing non-negative integers. I think you understand the question, right? What is the MEX, right? And what is the smallest non-negative integers? Okay. Okay. Now coming back to the examples, right? We have given example 1 where we have given this value, right? These numbers we can say, and this is the value we have given. Okay. So our goal is to find what all the possible moves and what is the smallest missing number in the given array. Okay, and we can understand these things how, if you pause this video, if you read the explanation, you will understand here. Okay, so very first let me go to the next page. यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया है, एक नंबर्स लिया है जो एग्जांपल 1 में दे रखा है, राइट? 1 minus 10 7 13 6 and 8. So this is the value we have given in the example 1, right? And another value we have given is 5, correct? Means we have given nums like this and value equal 5. हमें आउटपुट क्या चाहिए? Output we need is 4. Okay, this is the example we saying. So in the very first step I am saying compute each numbers remainder, right, when we divide by 5, because the value is 5, correct? Can I say that? So when the value is 5, right, we can calculate it, right? So very first compute, how we will compute the remainder? So we want each number's remainder which is divisible by 5, is it divided by the or not?
So you will apply this formula, right? And you will see these are the given numbers in this array I'm talking about, right? So we'll use these numbers, you can say, and for when you are using 1, if you take the remainder, you will get 1. When minus 10, you will get 0, right? When 7, you will get 2. When 13, you will get 3. When 6, you will get 1. When 8, then you will get 3. So this is what you have to find the remainder, nums remainder 5, and you will get these values, right? So the key idea is that every number can only move with its remainder group. Okay, likely like you can say all the numbers with the remaining one can comes. Let's suppose we can take 1, 6, 11 and so on, there will be their number, right? So let's try to understand. देखो हमने कंप्यूट क्यों किया है इस रिमाइंडर को, राइट? हमें इन नंबर्स दे रखा है, तो इच नंबर्स को इस वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, राइट? सो दैट वी कैन कीप देम नॉन नेगेटिव, राइट? टू कीप देम नॉन नेगेटिव वी हैव टू कंप्यूट द रिमाइंडर, राइट? सिंपल अब यही करते हो ना कि किसी अगर मुझे इसमें से नॉन नेगेटिव मुझे निकालना है, राइट? तो अगर रिमाइंडर आप देखोगे, पहले इसमें क्या वैल्यू था, इसमें नेगेटिव वैल्यू था इस नंबर के अंदर में, राइट? नाउ व्हाट यू आर गेटिंग नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट? दिस इज द पर्पस इज टू यूज द फर्स्ट स्टेप. लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप 2. समझ में आया ना? स्टेप 1 क्या था, ताकि हम रिमाइंडर हमें जो आए उसमें सॉरी जो नंबर गिवन अरे है वो नॉन नेगेटिव हो जाए, उसके लिए हमने यूज़ किया. नाउ इट इज सेइंग काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर इन ईच रिमाइंडर क्लास फ्रॉम 0 to 4. So if you see, I'll say remainder and there is a count. So when the remainder is 0, 1, 2, 3, 4, so हम इसे ग्रुप मान लेते हैं, right? 0, when we are getting the remainder 0, when value is 1, right? We are getting the count is how many? 1 from minus 10. When we have 2, means we are getting from 1 and 6. 1 we are getting like means जो remainder हमें get कर रहे हैं उसका count क्या है? So these are the counts and these are the remaining. We are getting from 7. We are getting 13 and 8 and we are getting 0. So we can say कि the key idea is that every number can only move with its remainder group. So remainder group के साथ हम उसका count बना लें, right? और हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर हैं जो फॉल हुए हैं इच ग्रुप के अंदर में, इच रिमाइंडर लेन के थ्रू. अगर हम इसे लेन की बात करें तो लेन जीरो में एक वैल्यू है, लेन 2 में 2 वैल्यू है, लेन 2 में 1 वैल्यू है, लेन 3 में 2 वैल्यू है, लेन 4 में 0 वैल्यू है, राइट? ऐसे बोल सकते हैं. मीन्स वी वांट टू काउंट हाउ मेनी numbers fall into each remainder group. Understand, right? Let's try to understand the very complicated thing here. Now try to form 0, 1, 2, 3, right? When you're trying to form 0, 1, 2, 3, so for each number I, you need one element from, if you apply, right, I remainder 5, right? So you have to compute to form if, otherwise you will find the MEX. So you have to go to the step by step. Let's suppose when I equal to 0, right? What we need? We need a class. If you apply this, you will get what? You will get 0. So we'll say, okay, count at 0 is what? 1. So like this, you have to apply and you have to check count at these values. You have to apply and you have to get. So when you are getting the count at 4, you are saying that no element available, right? Like this you are saying. So count at 4, we don't have any element. So we'll say, okay, MEX equal to 4, right? And this is our answer. So the greedily process that I equal to 4, which is our maximum achievable MEX. So this is our requirement, guys. Okay, I hope you understand now. आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो पीछे हमने किया था, कहाँ गया? आप यहाँ देख सकते हो 0 काउंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे काउंट आ रहा है. तो आप यहाँ भी बता सकते हो कि कहाँ पे हमें वैल्यू लेना है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? सो इनिशियल काउंट लेट्स सपोज 0, ये सब आपके काउंट्स हैं, ठीक है, और ये उसकी वैल्यूज हैं, राइट? सो व्हेन वी आइटरेट फ्रॉम 0 I to 0 अपवर्ड, what we need to do, we have to do I mod 5, right? And when I equal to 0, what you need? 0. Like this you have to check I 0, need is this value, counts are there. So you have to update each and these values, right? Then you have to consume the values 0, C0, C1, C2, C3. You have to find it like that. When you will see count C4, right, you are seeing that
after consuming this value, it will become what? 1. So each time we are reducing the value, right? So you will see C4 is coming 0. So we will stop it here. So आपको क्या करना है कि आइट्रेट करना है उसके ऊपर. ओके, दिस इज द लॉजिक गाइस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द वेरी सिंपल टर्म कि कैसे हमें सॉल्व करना है. ओके, सो हमारा मेनली पर्पस, अगर हम जो ग्रीडली अप्रोच हमने देखे थे उसमें मेनली पर्पस हमारा क्या था कि हमने नंबर बिल्ड करना स्टार्ट किया था, राइट, फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो नाउ वी वांट टू मेक 0, वी नीड समथिंग फ्रॉम द रिमाइंडर, सो वी विल यूज़ दैट, राइट. तो हम वो यूज़ कर रहे थे और फिर हमें रिमाइंडर निकाल के फिर उसको यूज़ करेंगे आगे. वैसे करके हम लास्ट तक ले गए आए थे. मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो पीछे बोला था, कहाँ गया, 1 मिनट, राइट. तो यहाँ पे हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें वैल्यू ना मिल जाए, राइट, 0, राइट. हमने यहाँ पे इस टाइम हम लेके जाएंगे रिमाइंडर और उसको यूज़ करके हमें आगे लेकर के क्या करेंगे, एक्चुअली वी नीड देम, राइट. इस टाइम वी नीड व्हाट, नीड 0, नीड 1, नीड 2 करके जाएंगे. लास्ट में हम देखें नीड 4 और लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगा ये, राइट. टू मेक 4 वी नीड रिमाइंडर 4 और वहाँ पे ये एम्प्टी हो जाएगा. फिर हमने ये देखा इसमें क्या हो रहा है. सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, राइट, और आप रिमाइंडर निकाल लोगे. फ्रीक्वेंसी एट रिमाइंडर को प्लस प्लस करते जाओगे, मतलब एक ग्रुप बना रहे हो हर एक उस पर. तो फ्रीक्वेंसी एट आर, जहाँ आपके 0 मिल जाएगा वहीं पे रिटर्न कर देना है. ये लॉजिक है, आपको पता है क्या करना है. आई के साथ फिर से रिमाइंडर निकालना है, वैल्यू के साथ जो वैल्यू आएगा रिमाइंडर उस पर चेक करते जाना है, राइट. दिस 2 थिंग्स यू हैव टू डू. when you are iterating, you find the remainder, you apply the remainder value and you will update the frequency. Now you will make a loop of I, right, and you will check again this value, right. Each time you will get the R, you will check if the what is the frequency, right, frequency at the remainder, you will get I and you will return that value. Okay, so एक टाइम क्या कर रहे हो आप, एक टाइम आप प्लस प्लस कर रहे हो, एक टाइम रिड्यूस कर रहे हो आप. This is what you are doing. So this is the thing we have to do, guys. If you have any doubt, let me know in the comment section, and thank you for watching this video. If you have any doubt, please ping me in the comment box, and thank you for watching this video.